Let's start with the new biochemical technique, that is column chromatography. Column chromatography, it is adsorption chromatography technique. In this technique, separation of molecules depend upon the extent of adsorption to the stationary phase. It doesn't depend upon the shape or size, but it depends upon the extent of adsorption to the stationary phase. In column chromatography, stationary phase is a solid material, and that solid material, it is packed in a vertical column made up of glass or metal. Now the principle of this column chromatography is when a mixture of mobile phase with sample to be separated are introduced from the top of the column, then the individual component of mixture move with different rates. It is like a race. Means if people are standing, some participants are standing for the race, they can move with a different speeds. So in the same way, if there is a mixture of different molecules, then each and every component of the mixture move with the different rates through the stationary phase. Those with lower affinity and adsorption to stationary phase move faster and eluted out first. Means जिनका affinity और adsorption power कम है to the stationary phase, जो easily adsorb नहीं होते और जिनका affinity lower है, वो फास्ट मूव हो जाते हैं और सबसे पहले इल्यूट होते हैं या सबसे पहले कॉलम से बाहर निकल जाते हैं. While those with greater adsorption and greater affinities move or travel slower and get eluted out last. जिनका adsorption power on stationary phase ज़्यादा है और जिनका affinity ज़्यादा है stationary phase के लिए, वो क्या हो जाते हैं, स्टेशनरी फेज को अटैच हो जाते हैं या एडसॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो धीरे 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 कॉलम के बाहर निकलते हैं. मींस इस पर से अपने को एक समझ में आता है कि जिनका एफिनिटी और एडसॉर्प्शन कम है वो फास्ट मूव होते हैं और सबसे पहले बाहर निकलते हैं, और जिनका एडसॉर्प्शन और एफिनिटी ज़्यादा है, दे गेट एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज and they travel slower and get eluted out last. Now preparation of column. How column is prepared? The column chromatography require a vertical column. Preferably it should be a glass column with a knob at the bottom end. This is preferably a burette shape cylindrical column. So column is like a burette. But on burette there are markings. So we need here a column which is burette shape but without marking or any readings. Stationary phase used here or adsorbent. Any adsorbent can be used. Calcium carbonate, silica gel, fine sand can be used here, and the particles of stationary phase should be of uniform size and shape without any impurities and without any contamination. So in column chromatography we require column which should be made up of glass and whose shape is like a burette without marking. For stationary phase we require the solid compound whose particle size should be of uniform size and shape
Mobile phase, it is the solvent of chromatographic grade. For mobile phase, either a single solvent or a mixture of solvent can be used as per the requirement for the separation. Then cotton wool or asbestos pad is used to plug the exit of the column at the bottom. So these are the requirement for the preparation of column. So we require burette shaped cylindrical column, then solid stationary phase whose particles are of uniform size and shape, then chromatographic grade mobile phase solvent, and cotton wool or asbestos pad. Now see here, in this diagram you can understand how the column is prepared. For this, the glass column, who is of burette shaped column, is used. It has knob at the end like a tap. It can be opened and closed, just similar to burette. Then here it is filled with, here at this part, here it is filled with some stationary phase. You can see stationary phase particles are of same size. Then here there is a layer of sand is kept, and at the bottom there is a wool, so that the column cannot get removed easily. Now here first, the stationary phase material, it is moistened with mobile phase. So सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो कॉलम तैयार कर दिया है एक बार, उसमें सिलिका जेल या और कोई भी स्टेशनरी फेज यूज करते हैं और उसके ऊपर एक सैंड की लेयर डाल देते हैं और नीचे के पार्ट में भी कॉटन फिक्स कर देते हैं. सो इस तरह एक बार कॉलम ड्राई हो गया कि उसके ऊपर फिर जो मोबाइल फेज है, आइदर टोल्यूइन, एसीटोन, टोल्यूइन प्लस इथाइल एसीटेट, then PET ether, these mobile phases can be used. So सबसे पहले इसके ऊपर यहाँ पे मोबाइल फेज ऐड करते हैं, तो मोबाइल फेज धीरे धीरे वो सॉल्वेंट मूव होता है और पूरा कॉलम मॉइस्ट हो जाता है. सो फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज इज मॉइस्ट विथ मोबाइल फेज. बाद में जिस सैंपल को सेपरेट करना है, दैट सैंपल इज पैक्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टेशनरी फेज. जो सैंपल सेपरेट करना है वो सैंपल यहाँ पे ऊपर ऐड करते हैं और उस सैंपल के ऊपर फिर से मोबाइल फेज डालते हैं एंड देन मोबाइल फेज स्टार्ट मूविंग. द मोबाइल फेज इज poured into the column over the sample and a collecting beaker is placed at the bottom of the column near the end of the, here the one beaker is kept so that ये जो इल्यूटेंट है वो कलेक्ट होता है. सो दिस इज द प्रोसेस फॉर कॉलम क्रोमेटोग्राफी. नो अब क्या होता है कि जैसे ही ये सैंपल यहाँ पे डाला है, जिसको विच कंटेन 3 और 4 कंपोनेंट्स, वो डालने के बाद इस पे एल्यूट ये सॉल्वेंट मोबाइल फेज डालते हैं और मोबाइल फेज के साथ में ये सैंपल मूव होता है. हियर यू कैन सी 3 बैंड्स. सो ये पहला जो बैंड है, इट्स एब्सॉर्प्शन पावर इज मोर. सो सैंपल में का जो कंपोनेंट है जिसका एब्सॉर्प्शन पावर ज्यादा है, इट गेट एब्सॉर्ब हियर. यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट एब्सॉर्ब हुआ है और जो कंपोनेंट जिसका एब्सॉर्प्शन पावर एकदम कम है वो सबसे नीचे एब्सॉर्ब हुआ है. अब एक बार ये 3-4 बैंड्स तैयार हो गए, फिर कोई भी एल्यूएंट डालते हैं. एल्यूएंट यानी जो इन बैंड्स को रिमूव कर सकता है. एनी
organic chromatographic technique grade liquid is used as a eluent. अब क्या होता है, एक बार ये कॉलम तैयार हो गए, फिर एल्यूएंट ऐड करते हैं. जब एल्यूएंट धीरे 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 नीचे पास होता है, जिसका एडसॉर्प्शन पावर सबसे कम था या जो सबसे नीचे एडसॉर्ब हुआ है, जिसने बैंड तैयार किया है, वो सबसे पहले बाहर निकलता है. यहाँ पे एक बीकर रखते हैं और इस बीकर में ये बैंड को कलेक्ट करते हैं. फिर ये बीकर को हटा देते हैं, दूसरा बीकर रखते हैं. धीरे धीरे ये बैंड निकल गया कि फिर ये बैंड यहाँ पे जो पार्टिकल्स कलेक्ट हुए वो उसके बाद में दूसरे बीकर में कलेक्ट करते हैं और फिर लास्ट में इन थर्ड बीकर this component is collected. In this way, if there is a substance or if there is a mixture of three components, they can be easily separated by using column chromatography. In column chromatography, we need to keep in mind only one thing, that the substance whose adsorption power and affinity is lower get eluted first, while whose adsorption and affinity is more get eluted, or it adsorb first and get eluted later. So in this way, column chromatographic technique is used for the separation of the molecules. Now, what are the advantages and applications of column chromatography? Column chromatography, as I already told you, it is a very simple technique and which is used since from a very long time. Column chromatography is used to separate active principal compounds from plant materials. Like in plant, various active components are there which can be separated by using column chromatography. Separation of compounds after organic synthesis can be done by using column chromatography. Like in organic reactions, different products are formed and those products can be separated from each other by using column chromatography. And the third and the most important application of column chromatography is it is used to separate or verify natural compound mixtures like alkaloids, glycosides, etc. Now, what do you mean by natural compounds? That you will study in organic chemistry, TYBSc organic chemistry.